Jai Hind, good morning and welcome to the daily current affairs and MCQ series. I believe that you all are doing good. Great. So let's get started. The first article that we are discussing today, that what are the retrospective amendments that have been brought into existence through the Union Budget 2022. So first of all, you need to know what do we mean by a retrospective amendment. See, when we talk about something that has been done from or with effect retrospectively, this basically means that you are bringing in that particular amendment right now, but that is going to be enforced from a back date. That is going to be enforced from a back date. For example, you are right now changing the law, right? That is in 2022, you are making amendments and you are bringing in some changes in the law, but those changes are not being effected from 2022 onwards, but rather from a back date. In this case, from 2004 2005 it is being made effective. So that is the simple meaning of this retrospective amendment, right? I believe that we all are clear with this thing. That is the first opening statement, talks about the retrospective tax amendments, right? So now let's get into the article. तो आपके लिए इंपॉर्टेंट क्या है कि क्या रेट्रोस्पेक्टिव अमेंडमेंट्स हैं इस बजट में की गई हैं जो, राइट, एंड द सेस एंड सरचार्जेस जिनके रिगार्डिंग पर्टिकुलरली ये आर्टिकल बात करता है. तो व्हाट डज दिस आर्टिकल से, दैट citing some of the court rulings also over the years where some taxpayers they have claimed the cess which they had paid as expenditure and not tax. And the tax department has said that now they are bringing in retrospective tax amendments to correct this anomaly. इस पर्टिकुलर लाइन का यहाँ पे या इस आर्टिकल में इस चीज का कहने का मतलब यहाँ पे ये है कि अभी तक जो है ये एक गलत प्रैक्टिस थी. कोर्ट्स की इंटरप्रिटेशंस भी इसमें जो है कहीं पे गलत थी कि सेस के ऊपर जो है लोग वो क्या करते थे, कंपनीज जो है वो क्या करती थी, दे यूज टू क्लेम दिस सेस एज एक्सपेंडिचर विच सर्टनली इज नॉट. ठीक है, सेस जो है बेसिकली, सेस इज बेसिकली अ काइंड ऑफ यू कैन से स्पेशलाइज्ड टैक्स विच इज इम्पोज्ड फॉर अ पर्टिकुलर पर्पस. ठीक है, टैक्स और सेस में व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन अ टैक्स एंड अ सेस? यस, कैन एनीबडी टाइप इन द कमेंट सेक्शन व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन टैक्स एंड अ सेस? टैक्स जो है दैट कैन बी फॉर एनी जनरल पर्पस, मतलब कि सरकार जो है आपसे पैसा ले रही है, दैट इज फॉर ऑल द जनरल expenses which the government intends to incur. But this cess is going to be for some specialized or some special expenditure which is going to be there, for which that money is going to be used. For example, the education cess, for example the agriculture cess, right? So that is, the name itself tells you that for that particular purpose only that money which is being collected through this cess is going to be used. That is the basic, you can say, difference. Yes, exactly, that is for certain special reason. And exactly, the cess is levied on the tax, right? It is not as such levied on the income, but it is levied on the tax which is being imposed on a particular good or service, right? So what the government has now done is that कि फाइनेंस एक्ट 2004 के थ्रू जब एजुकेशन सेस को इंट्रोड्यूस किया गया था, सिंस दैट असेसमेंट ईयर, दिस इज द असेसमेंट ईयर, that since that assessment year itself now this is going to be, the changes are going to be there, right? That is, it is going to take effect retrospectively from 1st of April 2005, है ना, ताकि जो है उसके बाद से कोई भी ऐसा नहीं हो सकता कि अगर आप still you can, if you have claimed, then that money also can be recovered, right? So that is the understanding here. हाँ, exactly, Shubhankar, that is, tax is for general purposes, all the purposes, cess is for a particular purpose. Exactly, absolutely fine, right? So that is the basic crux of this article, that how this is trying to correct that basic flaw or basic anomaly in the cess purposes, right? Chaliye, let's take this question now. Which of the following statements is or are correct in relation to the recently brought retrospective amendment to the Income Tax Act? First, the budget has allowed exemption of the amount received on account of death due to COVID retrospectively from 1st April 2020. And second, making a retrospective amendment to the Income Tax Act, the current budget has clarified that cess and surcharge will not be allowed to be claimed as deductions in the form of expenditure.
Okay, Rashi says A and Supriyo says C, Kshitija says B. चलो ठीक है, great, absolutely fine. देखो, अलग अलग चीजों के लिए रेट्रोस्पेक्टिवली इस बार प्रोविजंस जो है वो इंट्रोड्यूस किए गए हैं. उसमें एक चीज जो है वो कोविड भी है कि अगर जो है इफ अ पर्सन died because of COVID, right, and there is an amount which was received by the family of that person on account of that death in their family due to COVID, that certainly is also not going to be taxed, and that is why the exemption has been made effective retrospectively, right. So first is fine. Second जो है वो अभी हमने डिस्कस किया ही है ना. गुड मॉर्निंग विनय. सेकंड जो है भी हमने डिस्कस किया ही है कि अभी तक जो है सेस और सरचार्ज को आप डिडक्शंस की तरह क्लेम करके इसके ऊपर रिफंड लेते थे. This has been discontinued. You cannot allow, you are not allowed to, you are not allowed to take this refund first, and even it has been made effective retrospectively, right. So absolutely both the statements stand to be true. Your answer is going to be C, that is both 1 and 2. Yes, exactly. ठीक है, I believe this is clear. देखो, सिंपल सी बात है. क्रिमिनल जूरिस्प्रूडेंस की जब बात करते हैं ना, व्हेन वी टॉक अबाउट क्रिमिनल लेजिस्लेशंस और क्रिमिनल लॉज, यहां पे यू डू नॉट हैव द अथॉरिटी और द कॉन्स्टिट्यूशन डज नॉट परमिट यू that you cannot make them effective retrospectively. That is, for criminal related matters the laws cannot be amended retrospectively, but for civil and for tax related laws, I'll repeat this, for criminal laws the amendments cannot be retrospective. कि आज मान लो अगर आपने कोई क्राइम किया, ठीक है, उस क्राइम की आज की डेट में कैपिटल पनिशमेंट या डेथ पेनल्टी नहीं है, राइट, लेकिन अगर मान लो 2025 में उस लॉ को चेंज करके उस पर्टिकुलर क्राइम के लिए दे प्रोवाइड फॉर कैपिटल पनिशमेंट और फॉर डेथ पेनल्टी, तो ये नहीं हो सकता कि आपको रेट्रोस्पेक्टिवली आपने 3 साल पहले जो एक्ट किया था उसमें भी आपको क्रिमिनल उस एक्ट के लिए डेथ पेनल्टी दे दी जाए. दैट कैन नॉट बी डन. रेट्रोस्पेक्टिव अमेंडमेंट्स कैन नॉट बी डन इन criminal matters, but they can be done for civil matters, they can be done for civil laws, they can be done for tax laws, right, and that is why this is constitutionally valid here, right. Chaliye, great. So moving to the next article now, that is 3358 crore in मनरेगा wages not paid. तो एक तो कोविड की मार और ऊपर से जो है मनरेगा में wages pending, that is certainly a brutal combination for the rural folks, right. So the impact of COVID on rural employment, budgetary allocations and overall मनरेगा's performance, that becomes important from your prelims perspective, that becomes important from your mains perspective as well, right. क्यों? क्योंकि rural population के लिए एक जो last support था during entire pandemic, that was मनरेगा only, right. So what has happened is that कि अभी तक जो है इतने wages जो है वो pending पड़े हैं, इतनी payments, especially in the 3 states, that is West Bengal, उत्तर प्रदेश एंड राजस्थान. सो द पॉइंट इज, इसके साथ साथ क्लब किया गया है ट्राइबल कम्युनिटीज को, कि ट्राइबल कम्युनिटीज ने, द ट्राइबल कम्युनिटीज दे आर रेजिंग देयर वॉइसेस, देयर आर डिफरेंट एडवोकेसी ग्रुप्स इन द कंट्री हु आर आल्सो रेजिंग दिस वॉइस कि भाई एक तो जो है आप एलोकेशंस कम कर रहे हो, दूसरा जो है आप पेंडिंग पेमेंट्स क्लियर नहीं कर रहे, राइट. सो दैट सर्टेनली इज गोइंग टू अफेक्ट द चिल्ड्रन and the women, the malnourished amongst the tribal communities. कि एक तो न्यूट्रिशियस सपोर्ट जो उनको है वो कम हो रहा है और दूसरी तरफ से उनके पास जो पैसा आ रहा था मनरेगा की तरफ से वो पैसा नहीं आ रहा. सो उनके हाथ में इफेक्टिवली दे डू नॉट हैव द डिस्पोजेबल इनकम, राइट, विच इज गोइंग टू अफेक्ट देम बैडली. And the cuts in the food subsidies will be disastrous and they'll lead to direct intensification of hunger, especially for the tribal communities. ठीक है, तो दो इश्यूज हैं, एक तो है मनरेगा के वेजेस जो पेंडिंग है और दूसरा जो है कि पर्टिकुलरली जो सफर कर रही है ट्राइबल कम्युनिटीज ऑन अकाउंट ऑफ नॉन पेमेंट ऑफ वेजेस एंड रिडक्शन इन दी एलोकेशन, राइट. चलिए, सो लेट्स टेक द क्वेश्चन नाउ. Yes. Which of the following statements is or are correct with respect to मनरेगा? First, the center has reduced its budget allocation for the rural jobs scheme by 25% in comparison to revised estimates for the current year.
Second, wages must be paid according to statutory minimum wages specified for agricultural labour in the state under Minimum Wages Act 1948. Yes, so what should be the answer? ओके ग्रेट, सो लेट्स डिस्कस द फर्स्ट स्टेटमेंट. देखो इसी बारे में बात हो रही है कि बजट एलोकेशन जो है मनरेगा के लिए दैट हैज बीन रिड्यूस्ड बाय 25%. नाउ द प्रॉब्लम इज दैट कि एक तो आपके ऑलरेडी यू हैव द पेंडिंग वेजेस, you have the pending payments to be made, couple it with the reduction in the amount which is being provided now. So what is going to happen is that कि जब ये pending payments जो है ये clear होंगी, ठीक है, और अगले जो amounts हैं वो reduced हैं, what is going to happen is that कि जो उसके बाद का काम है that is going to suffer. मतलब कि एक तो पहले ही आपने रिड्यूस्ड एलोकेशन की है, उसके बाद आपने उस रिड्यूस्ड एलोकेशन में से जो पेंडिंग पेमेंट जब आप क्लियर कर लोगे, जो अमाउंट ऑफ मनी दैट इज गोइंग टू बी देयर दैट इज इवन गोइंग टू बी डिक्रीज्ड, एंड दैट मींस दैट उस डिक्रीज्ड अमाउंट के साथ यू विल नॉट बी एबल टू मेक दी फर्दर पेमेंट्स फॉर दी मनरेगा एनरोल्ड पीपल. व्हाट एग्जैक्टली इज गोइंग टू हैपन, दिस इज गोइंग टू गेट कैस्केडेड. ये पेंडिंग पेमेंट जो है दिस इज गोइंग टू बी कैरी फॉरवर्ड. They are going to get carried forward and the people will suffer who are enrolled in मनरेगा and they are not going to get their wages timely. ठीक है, तो that is why this is going to be troublesome even in the upcoming years that you are not clearing the payments. पहली चीज, और दूसरी चीज के जो further budget में allocations हैं they are also reduced, right? So the first statement is correct. जो second statement है वो बात कर रही है कि कौन से areas, कौन सा जो particular law है under which you are supposed to provide the wage, right? So that is basically from the wages, minimum wages act 1948, जिसके basis पे statutory requirement है कि minimum wages कितने pay कर रहे हैं. So answer will be C, that is both 1 and 2, right? I'm having a bad throat, so bear out with me, apologies for that. ठीक है, तो ये देखो अभी बेसिकली जो कुछ एडवोकेसी ग्रुप्स हैं लाइक नरेगा संघर्ष मोर्चा, अपार्ट फ्रॉम दैट यू आल्सो हैव द आदिवासी अधिकार राष्ट्रीय मंच, ठीक है, जो एडवोकेसी ग्रुप्स हैं विच आर एक्चुअली रेजिंग देयर वॉइस अगेंस्ट द बजटरी एलोकेशन रिडक्शंस एंड आल्सो द न्यूट्रिशनल एस्पेक्ट्स कंसर्न्ड विद द ट्राइबल पॉपुलेशंस, राइट? चलिए, सो ये एग्जैक्टली हम बात कर चुके हैं इस बारे में जो अब यहाँ पे एक्सप्लेनेशन में दिया है. मूविंग टू द नेक्स्ट आर्टिकल नाउ. सो देयर वाज एन आरटीआई फाइल्ड बाय वन ऑफ द एक्टिविस्ट्स, जिसके रिप्लाई में इलेक्टोरल बॉन्ड्स के बारे में कुछ इंफॉर्मेशन सामने आई है, एंड दैट इज व्हाट दिस आर्टिकल टॉक्स अबाउट. दैट इज हाईएस्ट एवर सेल बिफोर असेंबली इलेक्शंस ऑफ द इलेक्टोरल बॉन्ड्स. So what exactly is an electoral bond? What are the benefits? What are the limitations? You must be aware of that. So when we talk about an electoral bond, that basically is, it's a bearer instrument in the nature of a promissory note. So what exactly is a bearer instrument? A bearer instrument is basically nothing but, a piece of paper पे if you write that this paper has the validity of, it is bearing this amount of money. That is the bearer instrument. कि आप उस instrument को ले जाके when you deposit it in the bank will credit that amount of money to your account. Simple as that, right? कोई भी इसको, anybody who is possessing that bearer instrument is entitled to get that payment from the bank, right? Then this is an interest-free banking instrument. What does that mean? That means that you purchase the electoral bond. तो ऐसा नहीं है कि आपने आज अगर मान लो परचेज किया, एक हफ्ते या 10 दिन बाद आपने उसको जाके है किसी, आपने एक फॉर एग्जांपल मैंने एक इलेक्टोरल बॉन्ड परचेज किया फॉर 1 करोड़ रुपीज फॉर एग्जांपल, और मैंने ए पॉलिटिकल पार्टी या बी पॉलिटिकल पार्टी किसी भी पार्टी को वो डोनेशन दे दिया वो इलेक्टोरल बॉन्ड.
Now when that party is going to deposit that electoral bond in the bank, बैंक जितना 1 करोड़ रुपए था उनको क्रेडिट कर देंगे उनके अकाउंट में, राइट। लेकिन ऐसा नहीं होगा कि अगर वो 10 दिन बाद उन्होंने डिपॉजिट किया तो वो 10 दिन का इंटरेस्ट उसके ऊपर काउंट नहीं होगा, राइट। दैट इज इट इज interest free. You don't have any interest that is going to be accrued to you, right? Then the purchaser would be allowed to buy electoral bonds only after the KYC norms, and the payment has to be made from a bank account, right? That is where you have the transparency and the accountability aspects of it, कि आप जो है इसमें ब्लैक मनी इंट्रोड्यूस नहीं इजीली कर सकते। क्यों? क्योंकि बैंकिंग चैनल्स के थ्रू ही सारा काम हो रहा है ना। फिर इलेक्टोरल बॉन्ड्स जो है दे कैन बी डिपॉजिटेड ओनली इन अ पीरियड ऑफ 15 डेज, के 15 दिन के अंदर अंदर जो है जिस भी पार्टी को आपने दिया है उसको फ्रॉम द डेट ऑफ इशू विद इन 15 डेज यू कैन यूटिलाइज दैट, अदरवाइज इट विल लैप्स, राइट। एंड किसको आप डोनेशंस दे सकते हो इसके थ्रू? जो पॉलिटिकल पार्टीज आरपीए 1951 में रजिस्टर्ड पॉलिटिकल पार्टीज है, राइट। दैट इज अंडर द रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट 1951 द पॉलिटिकल पार्टीज व्हिच आर रजिस्टर्ड दे आर एलिजिबल, और या फिर कह लो उन पार्टीज को हम डोनेशन के तौर पे इलेक्टोरल बॉन्ड्स के थ्रू डोनेशन दे सकते हैं, राइट। सो दैट इज द बेसिक रिगार्डिंग द इलेक्टोरल बॉन्ड्स। आई बिलीव दैट यू मस्ट हैव brushed up your understanding of electoral bonds. So let's take the question now. Yes. So which of the following statements is or are correct regarding electoral bonds? First, the amount of bonds sold this time had been the highest before any assembly poll since the scheme started in 2018. Second, the scheme started in 2018 enables Indian citizens or companies to buy the bonds from SBI branches and selected branches of commercial banks. And third, these can be purchased in denominations starting from rupees 1000 to be used as anonymous donations to political parties. Right, so Supriyo is saying C and Shubhankar is saying D. ठीक है, ग्रेट। लुक, सबसे पहली जो चीज है दैट व्हेन यू टॉक अबाउट द इलेक्टोरल बॉन्ड्स, these can be purchased only from the branches of the State Bank of India. So you do not have the other commercial banks which are not eligible to sell the electoral bonds, right? So hence 2 gets eliminated and you eliminate B, you eliminate C and you eliminate D, you straight away reach your answer A, that is 1 and 3. Why? Because certainly they can be, this time it has been the highest since the introduction of the scheme in 2018, and these can be purchased in denominations starting from rupees 1000 and they can be used as anonymous donations. Why? Because the name of the person who is purchasing that electoral bond is not mentioned on that electoral bond, so that remains anonymous, right? Anonymous क्यों है? क्योंकि देखो इलेक्टोरल बॉन्ड के ऊपर जो भी डोनर है उसका नाम नहीं लिखा हुआ होता, right? So your answer will be A, that is 1 and 3. I believe this is clear, right? Electoral bonds news में है, so you can expect a question. So the answer is A. Let's move to the next article now. But purchase 1000 rupees, I thought it is very low. No, it is, the minimum denomination is rupees 1000 only, right Shubhankar? Chaliye, great. So the next article talks about the import duty changes in the budget and their significance. So what exactly is the issue that we are going to discuss here is that the import duty concessions that the government is extending on certain products to provide a boost to the domestic industry, right? कर क्या रही है सरकार? सरकार कह रही है कि जो ऐसी चीजें हैं, जो ऐसे प्रोडक्ट्स हैं which are not necessarily capital, technology or labor intensive, right? For them they introduce the higher custom duties on items of daily use such as umbrellas, headphones, earphones, loudspeakers, etc., etc.
सरकार करना क्या चाह रही है यहाँ पे? सरकार ये करना चाह रही है कि जो ऐसी चीजें हैं विच कैन बी मैन्युफैक्चर्ड इन आवर डोमेस्टिक मार्केट्स, विच कैन बी द डोमेस्टिक कंपनीज, द डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज कैन प्रोड्यूस देम, उन चीजों को बूस्ट देने के लिए व्हाट द गवर्नमेंट हैज डन थ्रू दिस बजट इज दैट इट हैज प्रोवाइडेड फॉर concession in the import duties for parts related to these items, but overall एक जो कंप्लीटली बिल्ट यूनिट है, या मान लो ऐसे अम्ब्रेला है फॉर एग्जांपल, या ईयरफोन्स है, या हेडफोन्स है, या स्पीकर्स है, ये जब आप इंपोर्ट कर रहे हो, पर्टिकुलरली कहां से इंपोर्ट होते हैं? चाइना, राइट? सो दिस इज द चाइनीज विच आर अगेन इन पिक्चर, जो बहुत कह लो कि रिड्यूस्ड प्राइजेस पे, बहुत थ्रो अवे प्राइजेस पे दे प्रोवाइड दीज थिंग्स। इनके ऊपर जो है इंपोर्ट ड्यूटीज इंक्रीज की गई हैं, सो एज टू प्रोवाइड अ बैरियर, so as to limit their import, or you can say limit their export from China to India, and rather give a push to the domestic players who are manufacturing domestic in the domestic market of India. उससे होगा क्या कि एक तो जो है you will give boost to the domestic employment, right? You will end up providing for more atmanirbharta, more self reliance, less of imports, and it is going to provide money in the hands of the population also, right? Employment के साथ साथ obviously it is going to help you provide money in the hands of people, right? So that is basically the signal to protect the domestic industries that these changes have been brought through the present budget, right? देखो बजट के ऊपर इस पूरे वीक में कुछ ना कुछ चलता रहेगा, इनफैक्ट आने वाले इस वीक में भी, और मे बी इन द अपकमिंग वीक ऑल्सो वी आर गोइंग टू कीप डिस्कसिंग something related to the budget, right? So please I'll request that you keep on adding all these things to your notes wherever you are writing your budget, ठीक है? जहां पे भी बजट के नोट्स बना रहे हो, क्योंकि ये स्कीम्स हैं, बजटरी एलोकेशंस हैं, जो पोटेंशियल ग्राउंड बन सकते हैं एक क्वेश्चन के लिए, राइट? चलिए, सो लेट्स टेक अ क्वेश्चन नाउ। हाँ जी, which of the following statements is or are correct with respect to the import duty changes in the union budget 2022? First, the changes made promote the one station, one product concept to popularize local businesses and supply chains. And second, the customs duty on umbrellas has been withdrawn while the custom duty on import of parts of umbrellas has been doubled. So what should be the answer here? I think you have got enough understanding now, you'll be able to answer it very easily. Yes, exactly, Nagesh. Aarti Mishra. चलिए, सुप्रियो कह रहे हैं कि आंसर डी होना चाहिए। ठीक है, ग्रेट। चलिए डिस्कस करते हैं। देखो पहली स्टेटमेंट जब बात कर रहे हैं दैट वन स्टेशन वन प्रोडक्ट जो है, दिस इज बेसिकली नथिंग बट दिस डील्स विद द लोकल बिजनेसेस, द डोमेस्टिक इंडस्ट्री, एंड टू गिव पॉपुलैरिटी टू देम, टू पॉपुलराइज देम, राइट? सो दैट एब्सोल्युटली इज फाइन। इसके बारे में बजट जो है पॉजिटिवली बात कर रहा है और इसको प्रमोट करने की बात कर रहा है। लेकिन जब आप बात कर रहे हो कस्टम्स ड्यूटी ऑन अम्ब्रेलाज, this basically has been doubled, right? But जो exemptions हैं on the import of parts which are required there for umbrellas, that exemption has been increased, right? So second is going to be incorrect. Customs duty आपने increase करके what you are trying to do is you are trying to provide a barrier, or you are trying to provide a cushion, you can say, to your domestic industry. क्वेश्चन का मतलब ये है कि आप एक रिलीफ प्रोवाइड करने की कोशिश कर रहे हो उनको एज अगेंस्ट द cheaper exports from China, right? So the answer is going to be A. That is, only the first statement is correct. Yes, exactly, Rohit. ठीक है, चलिए. So this is the opposite which was mentioned in the statement, and that is where you have to understand it. So coming to the last question for the day. Yes, which of the following statements is or are incorrect with respect to Wetland Bird Estimation Report? First, Sundarbans National Park has recently released the Wetland Bird Estimation Report for 2021-22. Second, the swamp deer are now found only in Bangladesh and Nepal. And third, the IUCN status of swamp deer is vulnerable. So what do you think should be the answer here?
सुप्रियो अम्ब्रेला कस्टमर ड्यूटी नहीं, कस्टम्स ड्यूटी। कस्टम्स ड्यूटी का मतलब ये है कि जब आप इंपोर्ट कर रहे हो उस चीज को तो उसके ऊपर कितना टैक्स देना पड़ेगा जो इंपोर्टिंग कमोडिटी के ऊपर अप्लाई होता है। ठीक है, फॉर एग्जांपल जैसे हम अम्ब्रेलास की बात कर रहे थे, तो अगर आप अम्ब्रेलास इंपोर्ट कर रहे हो तो यहां पे जो भी व्यक्ति उस अम्ब्रेला को इंपोर्ट कर रहा है उसको एक टैक्स देना पड़ता है, राइट, दैट इज द कस्टम्स टैक्स। तो अगर वो कस्टम ड्यूटी देनी पड़ेगी तो उसका मतलब ये है कि इफेक्टिवली अगर मान लो वहां से 100 रुपए की अम्ब्रेला आप खरीद रहे हो लेकिन उसके ऊपर जो है कस्टम ड्यूटी आपको 10 रुपए देनी पड़ रही है, तो इफेक्टिवली आपको वो 110 रुपए की पड़ी, राइट। लेकिन अगर इसको हम और इंक्रीज कर दें तो इसका मतलब ये है वी आर ट्राइंग टू डिस्करेज द इंपोर्ट ऑफ अम्ब्रेलाज फ्रॉम चाइना और फॉर दैट मैटर एनी अदर कंट्री। ठीक है, तो आप कर क्या रहे हो कि आप अम्ब्रेलाज के इंपोर्ट को डिसइंसेंटिवाइज कर रहे हो ताकि आप डोमेस्टिक इंडस्ट्री को प्रोटेक्शन दे सको, उनको एनकरेजमेंट दे सको कि वो डोमेस्टिक प्रोडक्शन जो है वो इंक्रीज करे। ठीक है सुप्रियो, आई बिलीव दैट इज क्लियर द कॉन्सेप्ट ऑफ इट। चलो, सो वी हैव सम आंसर्स हियर, ए बी सी एंड डी सही, मतलब ए बी सी डी सारे तुक्के मार दिए तुम लोगों ने 5th क्वेश्चन के लिए। चलो ठीक है, देखते हैं। देखो पहली बात तो जो फर्स्ट स्टेटमेंट है दैट इज इनकरेक्ट। क्यों इनकरेक्ट है? क्योंकि यहाँ पे इट इज नॉट द सुंदरबंस नेशनल पार्क विच हैज रिलीज द वेटलैंड बर्ड एस्टिमेशन रिपोर्ट। ये टाइप करके बताओ आप कमेंट सेक्शन में कि फिर कौन सी अथॉरिटी है या कौन सा नेशनल पार्क है जिसने ये वेटलैंड्स बर्ड एस्टिमेशन रिपोर्ट रिलीज की है। टाइप इट इन द कमेंट सेक्शन। तो पहला तो हो गया गलत। दूसरा जो है द स्वैम्प डियर दे आर फाउंड ओनली इन बांग्लादेश एंड नेपाल, ये भी गलत है। इंडिया में भी पाए जाते हैं, राइट, दे आर नॉट ओनली इन बांग्लादेश एंड नेपाल, रादर यहां से तो एक्सटिंक्ट हो गए हैं। ठीक है, तो जो सेकंड स्टेटमेंट है वो भी इनकरेक्ट। देन द थर्ड स्टेटमेंट दैट इज द IUCN स्टेटस फॉर स्वैम्प डियर इज वल्नरेबल, दैट इज फाइन। तो आपका आंसर तो हो जाएगा बी, दैट इज 1 and 2 ओनली। ओके, अहाना इज सेइंग काजीरंगा। हाँ जी, और कोई बताना चाहता है? यस, इट इज द काजीरंगा नेशनल पार्क, बिल्कुल। हाँ, नॉर्थ ईस्ट इन द स्टेट ऑफ असम, right, so you have the Kaziranga National Park and Tiger Reserve which had released this report. yes precisely। ठीक है, और जो swamp deer की बात कर रहे थे ना, the swamp deer, these swamp deer they are already extinct in Pakistan and Bangladesh, लेकिन नेपाल में और नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया में they are still found, right, and that is where the national park also comes into picture, so that is where your answer will be B, right। So that is the map for your reading. You can take a look at this number 2 in the index, and this is the area where you have the Kaziranga National Park, right? So with that we have come to an end. Thank you so much for joining in, and I believe that you certainly gained something out of the session, right? And if that is the case, do hit that like button, right? So stay safe, study well, and Jai Hind. See you in another video. Until then, stay safe, bye bye, and take care.